Dear students, I am Dr. Tamrakar from Bhartiya College of Agricultural Engineering, Durg. I will teach theory of machine of BTech first year, second semester class. Dear students, today we will discuss our next chapter, that is friction. As we all know, it has been established since long that the surfaces of bodies are never perfectly smooth. Whenever a very smooth surface is used under microscope, then it is found to have roughness and irregularities which may not be detected by an ordinary touch. If a block of one substance is placed over the level surface of the same or different material, a certain degree of interlocking of minutely projecting particles take place. Here some interlocking is takes place. This does not involve any force. When we put one block over another block, this will not show any type of force here. Okay? This does not involve any force so long as the block does not move or tends to move. When we start to move this block in this direction by applying some force P, then tangentially this block wants to tangentially move in the direction of P with respect to a surface which is at rest. The interlocking property of the projecting particle opposes the motion. Because of this interlocking or irregularities, this block opposes and a force in opposite direction. These forces oppose the motion. This opposing force which act in opposite direction to the motion. Okay, oppose the motion. Okay, motion movement under the block is called force of friction. Means that force opposes the motion is called force of friction, or simply called it is friction. It does follow that at every joint in machine, force of friction arises due to the relative motion between two parts. If two parts are there, then some relative motion between two parts. If these are like two parts in any machine, number of parts are there, then they are in contact with each other. Then between two parts there may be friction arise due to relative motion between the two parts, and hence some energy is wasted in overcoming the friction. So for overcoming the friction, some more energy we have to apply here as the P force. Though the friction is considered undesirable, as we are discussing here, this friction is undesirable, yet it plays an important role in the nature. You know that parts where friction is important, when we are walking, running, okay, at that time friction is very important. Example, walking on a road, motion of locomotive on rail, car, transmission of power by belt and gear, etc. The friction between wheel and the road is essential for the car to move forward. Friction is important for in car to move forward direction. Then next is type of friction. Here the types of friction are static friction. This friction is occur where when the body are at rest. This is called static friction. Then next is dynamic friction. When the body is in motion, then the friction assumed by the body is called dynamic friction. This is also called kinematic friction.
The kinetic friction is of three types: sliding friction, rolling friction, and pivot friction. In sliding friction, one body slides over the another body. It is the friction experienced by a body when it slides over the another body. This is called sliding friction. Rolling friction, it is the friction experienced between the surfaces which has ball or roller interposed between them, like in bearings, etc. Okay, rolling friction occur. Then pivot friction, this is the friction experienced by body due to the motion of rotation. Okay, motion of rotation over one another. In case of footstep bearing, we have seen the footstep bearing. The friction may be classified as here. Friction is classified as friction between unlubricated surfaces. मीन्स उसके बीच में यदि lubrication नहीं होगा तब. Between two dry and unlubricated surfaces is contact is known as dry or soil friction. This is also called dry friction or soil friction, because here two dry means no lubrication is provided in between the two surfaces in contact, and unlubricated surface in contact is known as dry friction or soil friction. It is due to surface roughness. This friction is because of surface roughness. What we have shown in your earlier picture, that the surface roughness of one of the block and on that another block is placed. So because of the surface roughness. This includes sliding friction and rolling friction. They are the example of sliding friction, and rolling friction is a friction between unlubricated surfaces. Then second type is friction between lubricated surfaces. When lubricant, oil or grease is applied between two surfaces in contact. If two surfaces are in contact in different machines, it has been used for reducing the friction. It is classified depending on the thickness of the layer. So in the lubricated surfaces, this is depending on the thickness of the lubrication. First is boundary friction or greasy friction or non-viscous friction. Okay, some grease is applied between the two surfaces in contact. So this is called boundary friction, greasy friction. It is the friction between rubbing surfaces. When the two surfaces are rubbing, then this type of friction is being done. Very thin layer of lubricant is applied in between the two surfaces. The thickness is of molecular dimensions. This thickness is of very less thickness, about to molecular dimensions, and the thin layer form a bond between two rubbing surfaces. Here a very thin layer is prepared between the two rubbing surfaces, and the lubrication is absorbed on surface from a thin film. This layer of grease has been absorbed by one surface, okay, and form a thin film. So here the friction is reduced. Here on applying the lubricant or using the lubricant, this friction reduces. Dear students, next is fluid friction. This is film or viscous type. In this type of friction, this friction is between the rubbing surfaces. The two surfaces are there, and because of this rubbing surfaces, this type of friction is experienced. When the surface have a thick layer of lubricant, here the lubricant are a thick layer of lubricant,
actual surface does not come in contact and thus do not rub against each other. It is thus obvious fluid friction is not due to the surface in contact, but it is due to viscosity and oiliness of the lubricant. Here viscosity is a measure of resistance offered to the sliding one layer of lubricant over an adjacent layer. Number of layers are there. Okay. Then the viscosity is the measure of resistance offered of the sliding one layer of the lubricant over adjacent layer. In lubricant, number of layers can be made with this here due to viscosity. The absolute viscosity of a lubricant may be defined as the force required to cause a plate of unit area to slide with unit velocity relative to a parallel plate. When the two plates are separated by a layer of lubricant of unit thickness. Next is oiliness. If two lubricants of equal viscosity, here the viscosity of both are same, at equal temperature is also same. At that time, when these lubricants are smeared on two different surfaces, it is found that the force of friction with one lubricant is different than that of the other. This difference is due to the property of lubricant known as oiliness. This is known as oiliness. The lubricant which gives lower force of friction is said to have greater oiliness. Which having lower force of friction is said to have greater oiliness. Next topic is limiting friction. Consider that a body A, here is a body A resting on the surface B having weight W, and because of this weight that reaction Rn opposite to the weight is acting on this body. In this position the body A is in equilibrium under the action of its own weight W and the normal reaction Rn that is equal to W. Here Rn is equal to W on B on A. Now if a small horizontal force P1 is applied here, the body A acting through its center of gravity, from its center of gravity, it does not move because of the friction force. Because of this friction force. This friction force is equal to the applied force P1. And after that, if we increase this force through a small amount, then this force P1 may be P2, and at that time also the second force F1 that is equal to P2. Then the force is increased to P2. If we increase the force P1, then this frictional force that is also increased to P2. That exactly balance this force F2. If we now increase the applied force P2, thus every time of effort of increased, the force of friction also increased. If we increase the force little, then the friction force also increase. There is, however, a limit beyond which the force of friction cannot increase. As we are increasing force P1,
this force, friction force is increasing, but a limit occur after that on increasing the force, this force P, this friction force cannot increase beyond the limit. With the force friction cannot increase. After this, any increase in applied force effort will not lead to any further increase in the frictional force. ठीक है, ये P बढ़ाते 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 एक ऐसा लिमिट आ जाएगा, उसके बाद ये F नहीं बढ़ पाएगा, मीन्स वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. तो वो जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. Thus the body A begins to move in the direction of force applied. This maximum value of frictional force when a body just begin to slide over the surface of other body is known as limiting force of friction, or generally it is limiting friction, called limiting friction. It may be noted that when the applied force is less than the limiting force, the body remains at rest. Means initial में जब ये आपका लिमिटिंग से कम का फोर्स लग जाएगा, चाहे P1, P2, P3 जितने फोर्स लगा ले, बॉडी आपका रेस्ट पे रहेगा. एंड फ्रिक्शन इनटू प्ले इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. और वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन which may be have any value between 0 to the limiting friction. तो 0 से limiting friction का इसका वैल्यू होता है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. When the applied force is less than the limiting friction, the body remain at rest. ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो बॉडी रेस्ट में होगा. काहे मूव करेगा भाई? जब यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो 3 किलो न्यूटन लग रहा है और आप वहां पे 2 किलोमीटर के फोर्स को खींचोगे तो थोड़ी बढ़ेगा आगे, वो नहीं बढ़ेगा ना. फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो रुक जाएगा. एंड द फ्रिक्शन इनटू प्ले इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जो फ्रिक्शन वहां पे लगा हुआ है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. Law of static friction. A certain law of static friction. Force of friction in opposite direction to the applied force. यदि हम फोर्स इधर अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा. ठीक है, अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, बोथ आर इक्वल. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन होगा और इक्वल होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल. ये इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे, ये इक्वल है और ये अपोजिट डायरेक्शन है. जब फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द बॉडी. ओके, देन मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ बोल दिया, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल डायरेक्शन आर एन बिटवीन द टू सर्फेसेस. तो जो दो सरफेस है उनके बीच में एफ बाई आर एन इज अ कांस्टेंट. ठीक है, जो आपको एफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पर एफ, आर एन आपका यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन है और ये जो है इसका रेशो एक कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कितना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है उसका जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है, एरिया से नहीं डिपेंड करता वो. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन रफनेस ऑफ द सरफेस. अब जैसे ये बोर्ड को बोलूं, ये बोर्ड हमारा रफ नहीं है, बहुत चिकना है, बहुत स्मूथ है, यहाँ पर स्लिप हो जाता है. ठीक है, और उसकी जगह यदि आप बोले कि ये दीवार कैसा है, तो ये दीवार बहुत रफ है, ये मेरा जो दीवार है ना ये बहुत रफ है. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द सरफेस.
अब यदि मैं यहाँ पर कोई चीज ऐसा स्लाइड करना चाहूंगा इस दीवार पर, क्योंकि ये रफ है तो वहां पर नहीं चलेगा और वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। और यदि यहाँ पे इस बोर्ड पे करो, ये सनमाइका बोर्ड है इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा और वो मूव करने लग जाएगा। ओके, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। हियर लॉ ऑफ kinetic or dynamic friction. The force of friction always act in a direction opposite to that in the with the body move. बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन रहता है, इधर बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ काइनेटिक है ना, मूव कर रहा है, जैसे हम लोग कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इट द बॉडी इज मूविंग, ठीक है। जो बॉडी आपका मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर भी वही है, नॉर्मल रिएक्शन एंड बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन और दो सरफेसेस के बीच में रहता है। बट द रेशियो इज स्लाइटली लेस देन दैट इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो लेस रहेगा। फॉर मॉडरेट स्पीड, एक मॉडरेट स्पीड जैसे हम लोग 40 की स्पीड में चलना है, 60 की स्पीड में चलना है, ऐसा बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट स्पीड। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कांस्टेंट। जब स्पीड सेम रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, बट इट डिक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। जैसे आप स्पीड बढ़ा देंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सॉइल फ्रिक्शन। अब जो सॉइल होते हैं वहां पर फ्रिक्शन के लिए बोल रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल लोड। जो आपका नॉर्मल लोड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बिटवीन द टू सरफेसेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। जो एरिया है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस फॉर अ गिवन नॉर्मल लोड, ठीक है। लोड सेम रहेगा, ठीक है, और कॉन्टेक्ट सरफेस का जितना एरिया है उससे इंडिपेंडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना एरिया वो कॉन्टेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ विच द कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर मेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, जो मटेरियल से वो सरफेस जो अपने बनाए हुए जो मिल रहे हैं जो सरफेसेस, ठीक है, उस पे ऑफ विच द कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर मेड, जिससे कॉन्टेक्ट सरफेस बन रहे हैं उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये मटेरियल बोर्ड जो है सनमाइका है, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा। ये दीवार है, ये लकड़ी है, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है।